तावदगन्वरास्ते हि समायाता प्रभुं प्रति तान् दृष्ट्वा विक्लान् रुद्रप्रपञ्चकुशलं प्रभु यथावते गणावृत्तं समाचक्ष्योक्षविस्तरात् तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रो महालीलाकरा प्रभु अभ्यं दत्तवांस्तेभ्यो महोत्साहं प्रवर्धयन् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे जलन्धरवधोपाख्याने विशेषयुद्धवर्णनं नामैकविंशतितमोऽध्यायः। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच अथ वीरगणे रुद्रो रौद्ररूपो महाप्रभु अभ्यगाद वृषभारूढसङ्ग्राम बृहस्निव रुद्रमायान्तमालोक्य सिंहादैर्गणा पुनः निवृत्ता सङ्गरे रौद्रा ये हि पूर्वं पराजिता वीरशब्दं च कुर्वन्तस्ते अपयन्ये शाङ्करा गणा सोत्सवासायुधा दैत्या निजगनु शर्वृष्टिभिः दैत्या हि भीषणं रुद्रं सर्वे दृष्ट्वा विदुर्ध्रुवा शाङ्करं पुरुषं दृष्ट्वा पातकानीव तद्दयात् अथो जलन्धरो दैत्या निर्वृतान् प्रेक्ष्य सङ्गरे अभ्यधावत्स चण्डीशं मुञ्चन् बाणान् सहस्रश निशुम्भशुम्भ प्रमुखा दैतेन्द्राक्षसहस्रश अभिजग्मु शिवं वेगाद्रोषात् दच्छदा कालनेमिस्तथा वीरा खड्गरोमा बलाहका भस्मरक्ष प्रचण्डक्षाप्रे चापि शिवं ययु बाणे सञ्चादयामासुरद्रुतं रुद्रगणाक्षं ते अङ्गानि चिचिदुर्वीरा शुम्भाद्या निखिला मुने बाणाधकार सञ्चन्न दृष्ट्वा गणबलं हरा तद्वान जालमाच्छिद्य बाणेराववृते नभा दैत्याक्षं बाणवात्यापि पीडितान् करोत्तदा प्रचण्डबालजालोघैर्पातयत् भूतले खड्गरोमशिर्रा काया तथा परशुनाचिनत् बलाहकस्य च शिरा खट्वाङ्गेनाकरोद्दिधा सबद्धद्वाधस्मरं दैत्यं पाशेनाभ्यहन्ध्रुवि महावीरं प्रचण्डश्च चकर्त त्रिशिखेन वृषभेन हता केचिद्वानेर्निपातिता न शेकुर्सुरास्थातुं गजासिंहादीर्ता इव तथा क्रोधपरितात्मा दैत्यान् धिक्कृत्वान् रणे शुम्भादिकान् महादैत्य प्रहसन् प्राह धैर्यवान् जलन्धरवाच किं वूर्जरेतैर्मातुर्द्रावदी पृष्ठतो हते न हि भीतवधाश्लाघ्य स्वगर्द शूर्मानिनां यदीव प्रधने श्रद्धा सारो वा शुल्को हृदि अग्नितिष्ठत्मात्रं मे न चेदग्रामय सुखे स्पृहा रणे मृत्युर्वक्ष्यास्ति सर्वकामफलप्रदा यशाप्रदो विशेषेण मोक्षदोऽपि प्रकीर्तिता सूर्यस्य मण्डलं भित्त्वा यायाद्वे परमं पदं परिव्राट परं ज्ञानी रनेय सम्मुखे हता मृत्योर्भयं न कर्तव्यं कदाचित् कुत्रचिदद्बुधे अनिवार्यो यतो हर्षो उपायर्निखिलैरपि मृत्युर्जनं वतां वीरा देहेन स जायते अद्य वा बद्धस्तान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवा तन्यमृत्युभये मुत्सार्य युध्यध्वं समरे मुधा स्वर्था परमानन्द
इहामुत्त्राप्य संशया सनत्कुमारवाच इत्युक्त्वा बोधयामास स्ववीरान् बहुशः स हि धैर्यदधुर्नते भीत्या पलायन्त्रणात् द्रुतम् अथ दृष्ट्वा स्वसैन्यं तत्पलायनपरायणं चुक्रोधाति महावीरा सिन्धुपुत्रो जलन्धरा तथा क्रोधपरितात्मा क्रोधादुर्ध्रं जलन्धरा अवापयामास रणे तीव्रा शनिसमस्वना जलन्धर्वाच युत्स्वाध्य मया सार्धं किमेभिर्निहतैस्तव यच किञ्च ज्वलं तेऽस्ति तदृश्य जटाधरा सनत्कुमारवाच इत्युक्त्वा बाणसप्तत्या जघान वृषभध्वजं जलन्धरो महादैत्यशम्भुं किलष्टकारिणं तान् प्राप्तान् महादेवो जलन्धरशरान् द्रुतं निजैर्हि निशितैर्बाणैश्छिच्छेदप्रहसन्निव ततो हयान्ध्वजं छत्रं धनुषिच्छेदसप्तभिः जलन्धरस्य दैत्यस्य न तचित्रं हरे मुने स चिद्धन्वा विरथा पाथोऽधितन्यसुरा अभ्यधाविच्छवं क्रुद्रो गदामुद्म्य वेगवान् प्रभुर्गर्दां च तत्क्षप्तां सहसैव महेश्वर पराशय महालीलो द्रुतं बाणैर्दिधाकरोत् तथापि मुष्टिमुद्मय महाक्रुद्रो महासुरा अभ्ययुध्यो महावेगाद्रुद्धं तं तज्जिह्वांसया तावदेवेक्षरेणाश बाणोघे स जलन्धर अखिलष्टकरं कारेण क्रोशमास्त्रं पाकृता ततो जलन्धरो दैत्यो रुद्रं मत्वा बलाधिकं विसर्जमायां गान्धर्वमदुत्तां रुद्रमोहिनीं तस्य मायाप्रभावा तु गन्धर्वापस्वरसां गणा आविर्भूता अनेके च रुद्रमोहनहेतवे ततो जगुष नृत्युर्गन्धवार्पसरसां गणा तालवेणुमृदङ्गाक्ष वादयन्ति स्म चापरे त्वद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यगणे रुद्रो विमोहिता पतितान्यपि वस्त्राणि करे भयो न विवेदस एकाग्रीभूतमालोक्य रुद्रं दैत्यो जलन्धर धामत स जगामाशु यत्र गौरी स्थिताभवत् युधे शम्भुनिशुम्भाख्यो स्थापयित्वा महाबलो दशतो दण्डपञ्चास्य स्त्रीनेत्रक्षजटाधरा महावृषभमारूढस्वर्था रुद्रसन्निभा असुर्या मायया व्यास स बभूव जलन्धरा अथ रुद्रं समायान्तमालोक्य भवल्लभा अभ्ययायो सखीं मध्या दर्शनं पथेऽभवत् यावदृश्य चार्वङ्गी पार्वतीं दुनुचेक्षर तावत् स वीर्यं मुमुचे जडाडगाक्षाभवत्तदा अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयवैवला जगामान्तहिर्ता वेगात्सा तदोत्तरमानसं तमादृश्य ततो दैत्यक्षणादिध्युल्लात्तामेव जवेनागातपुण्योर्धुं यत्र देवो महेश्वर पार्वत्यपि महाविष्णुं सस्मार मनसा तदा तावदृशं तं देवं सोपविष्टं समीपगं तं दृष्ट्वा पार्वती विष्णु जगन्माता शिवप्रिया प्रसन्नमनसोवाच प्रणमन्तं कृताञ्जलिं पार्वती उवाच विष्णुजलन्धरो दैत्य कृतवान् परमादुतं तात्तिकं न विदितं तेऽस्ति चेष्टितं तस्य दुर्मते तच्छ्रुत्वा जगदम्बाया वचनं गरुडध्वज प्रत्युवाच शिवां नत्वा साञ्जलिर्नमस्कृत्य
नम्रकन्धरा श्रीभगवानुवाच भवत्या कृपया देवी तद्धृतं विदितं मया यदा ज्ञाप्ये मातस्ततः कुर्यात्वनुज्ञया। सनत्कुमार उवाच तच्छ्रुत्वा विष्णुवचनं पुनर्प्याह पार्वती ऋषिकेशं जगन्माता धर्मनीति सुशिक्षयन्। पार्वती उवाच तेनैव दर्शिता पन्था बुद्धस्यस्व त्वं तथैव हि ततस्त्रीपातिव्रतं धर्मभ्रष्टं कुरु मदागया। नान्यथा स महादैत्यो भवेदध्यो रमेश्वरा पतिव्रत समो नान्यो धर्मोऽस्ति पृथ्वीतले। सनत्कुमार उवाच इत्यनुज्ञां समाकर्ण्य शीर्षध्याय तां हरिछलं कर्तु जगामाशु पुनर्जालन्धरं पुरम्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखण्डे जलन्धर वधोपाख्याने जलन्धर युद्धवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः।